नमस्कार, मैं हूँ CS प्रीति ग्रोवर, वेलकमिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर फंड एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। आज हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। हम सब ने ये वर्ड्स बहुत बार सुने हैं, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, बट आज इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में फ़र्क क्या है और क्या हम प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे लिए जो भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, डेथ वगैरह के केस में जब ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़े तो हमें कम प्रॉब्लम्स हों। तो हम आज डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन एंड इन दोनों का डिफरेंस। सो ट्रांसफ़र के केस में अगर आपके पास किसी एक कंपनी के शेयर्स हैं, आप सोचते हैं कि आज मुझे एक अच्छा प्राइस मिल रहा है और आप बेचना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वॉलंटरीली act between the two people who decide. One person decides to sell his shares and the other person decides to buy the shares. So it is a voluntary act जो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें ये ट्रांजैक्शन करना है। एक ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट होती है जिसके केस में हम थोड़ा सा और जानेंगे अभी कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो लाइबिलिटीज़ हैं ट्रांसफ़रर की, जो शेयर्स बेचता है वो ट्रांसफ़रर है और जो शेयर्स ख़रीदता है वो ट्रांसफ़री है। जो लाइबिलिटीज़ हैं ट्रांसफ़रर की, वो एक बार जब उसने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए तो वो सीज़ हो जाती हैं। अगर कोई अनपेड अमाउंट है या कुछ भी और लाइबिलिटी है तो वो ट्रांसफ़री की हो जाएगी बाद में। और कुछ स्टैम्प ड्यूटी पेएबल है which can be easily attached in the form of share transfer stamps. ये शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प्स बहुत बड़े पोस्ट ऑफिसेज पे आसानी से मिल जाती हैं। तो हमने एक तो ये कि ट्रांसफ़र एक वॉलंटरी एक्ट है। जब हम ट्रांसमिशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे ट्रांसमिशन एक वॉलंटरी एक्ट नहीं है, इट इज़ एन एक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में, ये हम सबको पता होना चाहिए। थोड़ा सा और इसके बारे में आज मैं बताने की कोशिश करूँगी। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हैपन्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कोई ऐसा इंसिडेंस होने पे, इफ़ देयर इज़ इंसॉल्वेंसी, इफ़ देयर इज़ डेथ ऑफ द शेयर होल्डर और इफ़ देयर इज़ इनहेरिटेंस बाय अ मेंबर। तो इस केस में हो सकता है जिसको शेयर्स मिलने हैं उसे ये पता भी नहीं कि उसे ये शेयर्स मिलने हैं। जैसे ट्रांसफ़र में था वो दोनों मिलके एक कॉन्शियस डिसीजन करते हैं, इस केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो शेयर होल्डर जिसकी डेथ हुई उसे पता भी नहीं कि वो किसको जाएंगे। अगर ये विल या कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ ऐसा डॉक्यूमेंट तो कुछ केसेस में बाद में डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। उन्हीं को अवॉइड करने के लिए हम देखेंगे कि या तो वो सिक्योरिटीज़ जॉइंट नेम्स में होनी चाहिए या फिर वो सिक्योरिटीज़ में एक नॉमिनेशन ज़रूर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो ट्रांसमिशन विल बी इनिशिएटेड बाय द लीगल हायर, जिसे हम उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, और द रिसीवर। कोई भी इस केस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, कोई शेयर ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट नहीं होती, कोई स्टैम्प ड्यूटी भी पेएबल नहीं है इस केस में, ट्रांसमिशन के केस में। जो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं फिज़िकल ट्रांसफ़र के लिए, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उनके केस में अगर आपके पास फ़िज़िकल में शेयर्स हैं तो वो फ़िज़िकल में शेयर्स आप ट्रांसफ़र के लिए भी सबमिट नहीं कर सकते। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा कि डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट आसानी से बहुत जगह पे खुल जाता है। तो अगर आपके पास फ़िज़िकल में शेयर्स हैं तो आप उनको अपने एक डीमैट अकाउंट खोल के उसमें डीमैट करा सकते हैं। ये बहुत आसानी से हो जाता है एंड एनुअल चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। बट अगर आपके पास फ़िज़िकल में शेयर्स पड़े हैं तो आप कभी आपको इनको ट्रांसफ़र करना हो तो आप ट्रांसफ़र कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि ये शेयर्स अब आप डीमैट में रखें। फ़िज़िकल में शेयर ट्रांसफ़र आज तभी पॉसिबल है जब वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं उनको फ़िज़िकल में ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देखते हैं।
we have to execute one share transfer deed. It comes in the format of a form specified by Ministry of Corporate Affairs. This is Form SH4. This has to be fully filled in, stamped by affixing share transfer stamps. It has to be dated, specifying the name of the transferor and the transferee. उनकी सारी details होंगी, name, father's name, address, occupation, folio number जो आपका एक folio होता है कंपनी की तरफ से allocated, folio number of transferor and transferee. एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है हर शेयर सर्टिफिकेट के लिए, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सब मेंशन होगा. नॉमिनल वैल्यू और कंसिडरेशन के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करके वो शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प से फिक्स होती हैं. ये फुल्ली फिल्ड इन शेयर ट्रांसफ़र डीड अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी लॉज्ड विद द कंपनी. जब ये फुल्ली एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो इसको कंपनी में विद इन 60 डेज़ हमें लॉन्च करना है. अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स डीमैट में हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा भी होगा कि डीमैट में शेयर्स ट्रांसफ़र करना अब एक बहुत ही आसान प्रोसेस है. यू जस्ट हैव टू इशू डिलीवरी इंस्ट्रक्शन एंड डिपॉजिट देम विद योर डिपॉजिटरी जहां आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है. जब डीमैट के केस में आपके पास शेयर्स हैं तो ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाता है. इट डज़ नॉट इवन टेक अ फुल 1 डे एट टाइम्स. अगर कुछ इशू है तो भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. फ़िज़िकल शेयर्स के केस में अगर आप कंपनी के पास ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो जब आपने शेयर ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट की तो आपको ये शेयर ट्रांसफ़र डीड जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, सपोज़ आपने ये डेट 1 जून को एक शेयर ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट की, उसको शेयर सर्टिफिकेट के साथ आपको विद इन 60 डेज़ कंपनी में सबमिट करना है. जब कंपनी में आप ये सबमिट करते हैं तो कंपनी अपने एंड पे सारा चेक करके, सिग्नेचर्स मैच करके, सब करके विद इन 30 डेज़ ये ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट करती है. लेकिन अगर डीमैट में शेयर्स हैं और रिक्वेस्ट गई है तो ये बहुत कम टाइम लगता है. मैक्सिमम टाइम पीरियड इज़ 15 डेज़ बट इट इज़ डन मच बिफोर दैट. तो डीमैट के केस में हम ये आगे भी देखेंगे कि ट्रांसमिशन में कि प्रोसेसेस बहुत इजी हो गए हैं. तो एक विद टाइम अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको शेयर्स बेचने की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी भी आप डीमैट अकाउंट खोल के उनको डीमैट अकाउंट में रखिए सो दैट द ट्रांसफ़र प्रोसेस इज़ ईजियर फॉर यू. क्योंकि लिस्टेड कंपनीज़ के केस में अभी आप कोई भी शेयर्स फिज़िकल में ट्रांसफ़र के लिए नहीं दे पाएंगे. यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी वो ये कि अगर हम शेयर्स जॉइंट नेम्स में रखते हैं तो हमें बहुत आसानी होगी. तो जब आप शेयर्स ख़रीदते हैं इट इज़ ऑलवेज़ पॉसिबल कि आप वो अपने एक नाम में ले लें या फिर जॉइंटली किसी के साथ नाम में ले लें. सपोज़ एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो ये सोच सकते हैं कि हस्बैंड का फर्स्ट नेम है एंड सेकेंड नेम वाइफ का है. तो जॉइंट नेम्स में अगर ये शेयर होल्डिंग होती है तो किसी भी अनसर्टिनिटी के केस में ये बहुत आसानी से दूसरे शेयर होल्डर के नाम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. नहीं तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है. तो बाद में आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क बढ़ जाता है. So when a person holds one or more shares jointly with one or more other person, then they are called joint shareholders. And joint shareholdings are beneficial. In case of death, then the remaining joint holders will be entitled to the shares. इसमें कोई भी ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता और ये बहुत आसानी से फिर दूसरे जॉइंट होल्डर के नाम में शेयर्स आ जाते हैं. एक और चीज़ जो हमें हमेशा करनी चाहिए, अगर हमने जॉइंट शेयर होल्डिंग रखी है तो बहुत अच्छा है. अगर हमने जॉइंट शेयर होल्डिंग नहीं रखी, सपोज़ एक मिस्टर ए के नाम में शेयर्स हैं, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू फिल नॉमिनेशन. दैट in case
इट इज़ एन यू डिस्क्राइब अ पर्सन कि मेरी कुछ डेथ के केस में इस व्यक्ति को वो शेयर्स पास ऑन होंगे. दैट पर्टिकुलर पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द मैंडेट इज़ नोन एज द नॉमिनी. एंड नॉमिनेशन अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो वो कभी भी भर सकते हैं. सो नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द शेयर होल्डर. जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके पास जो भी शेयर्स हैं, कुछ भी यूनिट्स हैं, हम आगे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में भी आजकल बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. लेकिन आपके पास जो भी शेयर्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं, उनमें आप नॉमिनेशन ज़रूर भरें. आप ये सोचें कि आपके जाने के बाद जो फैमिली को डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसानी से हो जाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. तो रिव्यू ऑल योर एसेट्स एंड शेयर्स हेल्ड एंड फिल इन द नॉमिनेशन इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी देयर. जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, एज आई सेड बिफोर, कि इट्स नॉट अ वॉलेंट्री एक्ट, it is an act by operation of law. Again, it is easier when shares are held in demat form. Physical अगर आपके पास शेयर्स हैं और किसी इवेंचुअलिटी में फिज़िकल शेयर्स ट्रांसमिशन के लिए सबमिट तो हो जाएंगे, बट जो लीगल हायर है उसको वो फिज़िकल में शेयर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे नहीं. उसको फिर भी वो शेयर सर्टिफिकेट्स डीमैट अकाउंट में ही मिलेंगे. तो हम एक एक करके देखते हैं. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ फिजिकल शेयर्स. इस केस में जो प्रोसेस है, वो जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं सेबी पे, उनके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उनके लिए सेबी की डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं. जो सब लिस्टेड कंपनीज़ एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करती हैं. जहाँ पर शेयर्स लिस्टेड नहीं हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, उनके लिए कंपनीज़ थोड़ा अपना प्रोसेस एज़ पर देयर ओन बोर्ड फॉर्मेट वो इंट्रोड्यूस कर सकती हैं. बट जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगी. इन केस ऑफ फिजिकल शेयर्स, एन एप्लीकेशन टू द कंपनी बाय अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल हायर है वो शेयर होल्डर की डेथ के बाद एक रिक्वेस्ट देगा with certified copy of death certificate, succession certificate, probate, which is a certified copy of will, and specimen signature of the successor. So basically जो successor है उसके signature तो कंपनी के पास नहीं है, तो उनके specimen signature अब कंपनी के पास सबमिट होंगे. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकल में शेयर सबमिट हो सकते हैं एंड वो ट्रांसमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है. बट कंपनीज़ कुछ अपनी और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो तो कम्प्लीटली सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगी. जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इसमें आपसे एनओसी फ्रॉम अदर लीगल हायर्स और इंडेमनिटी मांग सकती हैं. बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबमिट करने ही होंगे. इन केस ऑफ डीमैट शेयर्स, इफ़ द शेयर्स आर इन डीमैट अकाउंट, then the survivor needs to submit the following documents. एक ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, एफिडेविट है, नोटराइज्ड कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी डीड, एनओसी फ्रॉम द लीगल हायर्स एंड फैमिली सेटलमेंट डीड ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय ऑल द लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड बेनिफिशियल ओनर. अब हमें यहाँ पर जो थोड़ा सा प्रोसेस है सेबी की तरफ से जो लिस्टेड कंपनीज़ के लिए है, उसमें अगेन 2-3 चीज़ें आएंगी कि अगर आपका केस है जिसमें नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है तो आपके लिए इजी हो जाएगा. आपको कम डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एंड वो थोड़ा सा जो आपके बाद आपकी फैमिली है उनके लिए वो प्रोसेस हैंडल करना इजी हो जाएगा. आप सोचिए कि ये एक कंपनी के शेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर किसी की डेथ होती है, उसके पास 10 कंपनीज़ में शेयर्स हैं, 50 कंपनीज़ में शेयर्स हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें इनटू द नंबर ऑफ कंपनीज़ इन विच शेयर्स आर हेल्ड, तो वो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क फिर कितना बढ़ जाएगा. तो इसलिए अगर नॉमिनेशन है
तो सिंपल 3 चीज़ें सबमिट करनी है आपको इन द केस ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी ऑल्सो. सो वो जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं ड्यूली साइंड ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म बाय द नॉमिनी, नॉमिनेशन इस केस में रजिस्टर्ड है, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द नॉमिनी which is also to be certified by a notary public or gazetted officer, और self attested copy of the PAN card of the nominee. तो सिंपल ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जब नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है. अगर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा. सो हम देखते हैं कि वो प्रोसेस थोड़ा सा जो और बढ़ता है, उस केस में भी सेबी ने कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है. वो हम देखते हैं. जब एक सिंगल नेम में सिक्योरिटीज़ हैं, स्पेशली अगर सिंगल नेम में सिक्योरिटीज़ हैं और नॉमिनेशन भी नहीं है, देन द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आर अ नोटराइज्ड एफिडेविट फ्रॉम ऑल द लीगल हायर्स regarding their claim of legal ownership of securities. अब आप देखिए, आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि लीगल हायर्स कौन है. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, पर्सन, अ मेल मेंबर, मिस्टर ए, हिज लीगल हायर्स वुड बी हिज वाइफ, हिज पेरेंट्स एंड हिज चिल्ड्रन. अब वो जितने भी लोग हैं उन सब से इस केस में हमें एफिडेविट चाहिए होगा. और अगर ये कितनी सारी कंपनीज में शेयर्स हैं तो आप देखिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे बढ़ता जाएगा. सो इन केस देयर इज़ अ सक्सेशन सर्टिफिकेट और अ प्रोबेट और अ विल कुछ है, तो उस केस में अगर लीगल हायर एक स्पेसिफाइड है कि ये ही एक क्लेमेंट होगा, या किसी ने विल कर दिया है कि मेरे जाने के बाद ये मेरे शेयर्स इस व्यक्ति को मिलेंगे, तो वो एक एफिडेविट से हो सकता है. That person alone can submit the affidavit. Otherwise, an affidavit from all the legal heirs would be required. Transmission request form again by all the legal heirs. जो सारे उत्तराधिकारी हैं, हर एक डॉक्यूमेंट पे उस केस में सबके साइन होने होंगे. Original death certificate or copy of death certificate attested by all the legal heirs and also certified by notary public और gazetted officer. इसके साथ साथ और रिक्वायरमेंट्स हैं. ये हम सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं जब हमारे पास शेयर्स सिंगल नेम में थे और नॉमिनेशन भी नहीं रजिस्टर्ड था. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द लीगल हायर्स, अ कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय द लीगल हायर्स विच इज़ सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट ऑफ will, letter of administration or court degree, legal hireship certificate along with notarized indemnity bond and NOC. Indemnity bond and NOC again from all the legal hires. तो ये एक कंप्लीट इतनी बड़ी लिस्ट हो गई एक कंपनी के केस में when the shares are held in a single name and there is no nomination. तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक एक कंपनी के केस में करते करते जो वो फैमिली है उनको इतनी बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ये काम. दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल दैट द शेयर्स आर हेल्ड इन जॉइंट नेम्स. अगर सिंगल नाम में हैं शेयर्स तो नॉमिनेशन ज़रूर रजिस्टर्ड हो. सेबी ने इसको कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस दिया है जिसकी लिमिट्स अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल 22 में थोड़ी सी इंक्रीज भी की हैं सेबी ने. व्हेन द शेयर्स, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज़ ₹5 lakhs पर लिस्टेड एंटिटी. तो ये लिमिट पहले 2 लाख थी, अब बढ़ा के 5 लाख की गई है अप्रैल 22 में. अगर फिज़िकल में शेयर्स हैं आपके पास और शेयर्स की जो वैल्यू है वो 5 lakhs तक है, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. आपको हर एक लीगल हायर से NOC लेना होगा कि वो एक पर्टिकुलर क्लेमेंट की वो कह रहे हैं कि एक मिस्टर ए की डेथ के बाद वो शेयर्स उनके वाइफ के नाम में कर दें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट NOC हैज़ टू बी गिवन. उस केस में
सबके एफिडेविट्स की, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो प्रोबेट ऑफ विल, उसकी नहीं ज़रूरत होगी। तो इस केस में अगर शेयर्स की वैल्यू, फिज़िकल में शेयर्स हैं और वैल्यू 5 लाख तक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। अगर शेयर्स डीमैट में हैं और वैल्यू 15 लाख तक है, तो ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिमिट पहले 12 लाख थी, अभी सेबी ने थोड़े दिन पहले अप्रैल में इसको बढ़ा के 15 लाख किया है व्हेन शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। देन NOC, as I said before, I'm just repeating it. NOC from all legal heirs that they have no objection if the shares are transferred to one legal heir. And एक indemnity bond वो देंगे where they say that they're indemnifying the RTA, तो रजिस्ट्रार होता है उसको इंडेमनीफाई करने के लिए या कंपनी को इंडेमनीफाई करने के लिए कि हाँ, आप ये शेयर्स इस पर्टिकुलर लीगल हायर के नाम में दे दें और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा वो सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट और विल या कोर्ट डिक्री नहीं है तो उसकी नहीं डिमांड करेगा वो कंपनी या RTA। बट ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर वो शेयर्स फिज़िकल में हैं तो फिज़िकल में शेयर्स ट्रांसमिशन होने के बाद भी वो लीगल हायर को फिज़िकल में शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। तो RTA पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक लेटर इशू करेगा, कंफर्मेशन लेटर, वेयरइन इट सेज कि ये शेयर्स आपके नाम में ट्रांसमिशन हो गया है, बट आप अपनी डीमैट अकाउंट डिटेल्स दीजिए। इफ़ यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट, द नॉमिनी, जिनके नाम में ट्रांसमिशन हो रहा है शेयर्स, अगर उनका डीमैट अकाउंट नहीं है तो दे हैव टू मेक श्योर दैट दे ओपन अ डीमैट अकाउंट। बिकॉज जब एक बार आपको ये लेटर ऑफ कन्फर्मेशन आएगा ट्रांसमिशन के बाद, उसके बाद आपको वो लेटर की वैलिडिटी 120 डेज़ है। 120 डेज़ में आपको अपनी डीमैट अकाउंट डिटेल्स वो RTA को देनी है। एक बार रिमाइंडर आएगा 45 डेज़ के बाद, फिर एक और रिमाइंडर RTA देगा 90 डेज़ के बाद। लेकिन अगर आपने 120 डेज़ के अंदर भी वो डीमैट अकाउंट डिटेल्स नहीं दी RTA को, तो वो शेयर्स एक डीमैट सस्पेंस एस्क्रो अकाउंट में चले जाएंगे। वो शेयर्स आप नॉमिनेशन होने के बाद भी, सब ट्रांसमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी आपको ना फिज़िकली दिए जाएंगे, क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट डिटेल्स नहीं दी तो आपके डीमैट अकाउंट में भी नहीं आए और वो एक सस्पेंस एस्क्रो अकाउंट में चले गए। तो आप समझ रहे हैं ये प्रोसेस और उसके बाद बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर जो लेटर आपके पास RTA से उसके बाद भी आ रहा है कि आप डीमैट अकाउंट डिटेल्स दें, तो आपको वो सीरियसली लेना है, सो दैट बाद में जो एस्क्रो अकाउंट सस्पेंस में चले जाएं, उससे फिर ट्रांसफ़र करने के लिए फिर एक और स्टेप आपके लिए नहीं तो बढ़ जाएगा। अभी बहुत RTAs वैसे भी वो लेटर डाल रहे हैं कि अगर आपके पास फिज़िकल में शेयर्स पड़े हैं तो आप KYC प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। प्लीज़ टेक दैट ऑल्सो सीरियसली, अदरवाइज़ वो शेयर्स फ्रीज़ भी हो सकते हैं। जो टाइम पीरियड है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फिज़िकल शेयर्स के केस में कंपनी के पास अगर जब रिक्वेस्ट आती है तो कंपनी विद इन 1 मंथ वो रिक्वेस्ट प्रोसेस कर लेती है। डीमैट के शेयर्स में अगर रिक्वेस्ट आपने सबमिट की तो वो विद इन 7 डेज़ ही कंपनी प्रोसेस कर लेगी। सो बेसिकली वी आर सीइंग दैट एवरीथिंग इज़ फास्टर इन द केस व्हेन शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। इसमें मैं थोड़ा सा ये कवर करना चाहूँगी, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ व्हेन यूनिट्स आर हेल्ड इन म्यूचुअल फंड्स। अभी आजकल हम लोग देखते हैं बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के केस में ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल। अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने एंड से अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दें वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अगर वो करना चाहेंगे, आपको एक बार रिडीम करके फ्रेश उनके नाम से रिक्वेस्ट डाल के
वो लेना होगा, बट ट्रांसफ़र नहीं होता है म्यूचुअल फंड्स में. So transmission, again in the case of mutual funds, it is beneficial that units are held in joint names. अगर joint names में नहीं है तो आप नॉमिनेशन ज़रूर फाइल करें. अगर आज आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स लेते हैं तो ये कंपलसरी है वैसे कि आप नॉमिनेशन फाइल करें, बट सपोज़ आपने कुछ दिन पहले लिए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स और उसमें नॉमिनेशन फिल्ड नहीं है, तो प्लीज़ आप वो रिव्यू करें और नॉमिनेशन फाइल करें. बिकॉज नॉमिनेशन फाइल ना करने से जो बाद में प्रोसेस है वो अगेन इट्स वेरी वेरी लेंदी एंड कम्बरसम. In case of transmission, units of a deceased unit holder are transferred to the nominee or legal heirs of the deceased unit shareholder. The process of transmission is very long and cumbersome. In case of death of first holder, if there are two surviving joint holders, the surviving second holder will be treated as the new primary first holder. So I hope all this information is useful to you. Thank you so much. Please take precautions and exercise all these benefits. आप nomination ज़रूर file करें. Thank you so much. क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग. ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास. उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी. राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी. 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए. हार्ट अटैक आया है. देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है. डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें. अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं. सावधान रहें, समझदार बने. IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी. हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है. पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या. सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो. साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा. हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने. नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें. नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ. ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं. IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
नमस्कार। ज्ञान दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाई इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वाई व्हाट आर दी वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो जैसा कि हम सब समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और बिना इन्वेस्टमेंट के हम आगे बढ़े वो बहुत मुश्किल है। वॉरेन बफे का एक कोट है विच सेज नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकेंड इनकम। सो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ इस तरह का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आज के पेंडेमिक के युग में तो ये और भी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वी मस्ट कीप अ बैकअप फॉर अस, और उस बैकअप को रखने का सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, कहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है, उसमें रिस्क प्रोफाइल कितना हो सकता है, आज हम उसके बारे में सारी बात करेंगे और वही चर्चा करेंगे। और हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें किस मात्रा में और किस प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी एज प्रोफाइल की भी हम बात करेंगे कि करना चाहिए। आप अगर देखें कि सेविंग क्या होता है, सेविंग हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली मैं अपना जो कमाई करता हूँ वो जो मेरा ख़र्चा है उसको निकाल के जो मेरे पास पैसा बचता है वो मेरा सेविंग है। अब इस सेविंग को ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो किस तरह से उस सेविंग को मैनेज करना है, किस तरह से उसको हमें एक अलग से निकाल के रखना है और इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से करना है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सो सेविंग हमारी नॉर्मली कहाँ रहती है? सेविंग हमारी नॉर्मली रहती है फिक्स डिपॉजिट्स में या हमारे बैंक अकाउंट में। अब आपको मालूम है कि बैंक अकाउंट में एक कम मात्रा में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर हम उसको फ़िक्स डिपॉज़िट कर देते हैं, अगर मेरे सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो उसमें और भी कम मिलता है, और अगर मैं उसको फ़िक्स डिपॉज़िट कर देता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल की मियाद में, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस कई रहती हैं, हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। मनी इज़ वेरी सेफ़ अगर हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हैं, मेरे सेविंग बैंक में पड़ा है, मेरे फ़िक्स डिपॉज़िट में पड़ा है, तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बैंक आर वेरी सेफ़, और मैं अगर नेशनलाइज बैंक में ही अपनी सेविंग रखता हूँ तो मैं और भी सेफ़ हूँ। और हाई लिक्विडिटी होती है, क्योंकि आज के युग में ये भी रहता है कि भाई मुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी मेरे पे रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो उसके हिसाब से वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन विड्रॉ द मनी। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कब करना है, कितना करना है और किस इंस्ट्रूमेंट्स में करना है, वो एक सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन होना चाहिए आपका। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो सेवर के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं। सेवर क्या करता है, वो पहले अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को समझता है कि मेरी जो कम टाइम में मुझे कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से वो कुछ पैसा अपना बैंक में रखता है ताकि उसको मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकूं, उसको मैं कभी भी विड्रॉ कर सकूं, और जब भी मुझे कोई ऐसा ज़रूरत आए तो मैं उसको अपना यूटिलाइज़ कर सकूं। फिर कुछ तरह की सेविंग होती है कि जैसे आपने अपने बड़े जो ओकेजन्स हैं, लाइक मैरिज ऑफ योर डॉटर, मैरिज ऑफ योर सन, और लाइक दैट, तो कुछ सेविंग जो भी करते हैं वो उस एंगल से भी करते हैं कि भाई हमें उस ओकेजन पे मेरे को ये पैसा चाहिए। तो आपको मालूम है कि ये मेरे को 5 साल चाहिए बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली उसको अकोमुलेट कर रहे हो उस पैसे को, सो दैट मैं उसको एक टाइम पे विड्रॉ कर सकूं। या आपको अपना
कहीं पे इन्वेस्ट करना है, घर बनाना है या whatever, तो सेविंग्स आर फॉर मल्टीपल रीजंस, राइट। और अब वो रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट में सेव करना है। और इन्फ्लेशन, आपको जैसे मालूम है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहता है, महंगाई दर जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती है, और अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ रुपी गोज़ डाउन, क्योंकि जो पैसा मेरे लिए आज मान लीजिए मैं सेविंग कर रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपए मेरे को मिल जाना चाहिए इस वक्त में, वो उस 1 लाख की वैल्यू जो मेरे पास आज है वो आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद काफ़ी कम होगी। तो इन्फ्लेशन का एंगल भी ध्यान में रख के सेविंग करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अगर उस स्टेज पे इतना पैसा चाहिए होगा तो वो जो एस्टिमेटेड अमाउंट हम मान के चलते हैं कि मुझे सेविंग करना चाहिए, उसमें हमें इन्फ्लेशन का एंगल भी एस्टिमेट प्रॉपरली करना चाहिए। बिकॉज़ ये नहीं हो कि आप आज के हिसाब से सोच रहे हो कि मेरा आज मुझे आज अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो मुझे 10 साल बाद भी 1 लाख की ज़रूरत होगी। नहीं, आपको 10 साल बाद उस तरह के इन्फ्लेशन रेट के बाद जो वैल्यू आएगी उतने अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन फैक्टर को भी ध्यान में रख के हमें अपनी सेविंग करनी चाहिए। और अगर हम आगे बढ़े तो सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इसमें फ़र्क क्या है। सेविंग हमारा है जो मेरा आइडल कैश या मेरा पैसिव कैश पड़ा हुआ है, नो, यू वर्क फॉर मनी एंड यू पे योर बिल्स एंड पेमेंट्स, और आपकी एक वेल्थ प्रिजर्वेशन आपकी एक एम होता है कि मेरी एक वेल्थ बिल्डअप हो जाए। इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली ग्रो योर मनी रिमेन इज एक्टिव, आप उसमें पैसा ज़्यादा लगाते हैं, मनी वर्क्स फॉर यू, गिव्स यू डिविडेंड एंड रिटर्न, एंड एम इज़ वेल्थ क्रिएशन। ऑफ कोर्स वहाँ वेल्थ प्रिजर्वेशन है, इधर वेल्थ क्रिएशन है। तो इसीलिए आपको सेविंग माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पे जाना है। बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो लॉन्ग टर्म चलेगी, इन्वेस्टमेंट हमें आगे लेके जाएगी, और जब भी हमें किसी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें अपने उस पैसे को इस्तेमाल करना है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को भी लिक्विडेट कर सकते हैं। और मैं आपको इसी तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आज बताऊंगा कि जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम उनको जैसे हम सेविंग करते हैं, सेविंग की तरह ही उसको इन्वेस्टमेंट को भी हम लिक्विडेट कर सकते हैं और हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। नाउ इफ़ यू लुक एट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं और हम ये एग्जाम्पल के लिए 10% ब्याज भी उस पर मान के चलते हैं, ये मैक्सिमम 10% से ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा फॉर 10 ईयर्स, तो वो रिटर्न जो है आपकी 12,96,871 रुपये बन जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो आपको वो कंपाउंड होके पैसा जो है आपका ऑलमोस्ट 10 साल में एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है जो कि आपको मिल सकता है। तो हमें हमेशा एक कंपाउंडिंग जहाँ पे हो रही है उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट भी है उसके ऊपर हमें ब्याज पे ब्याज जिसे बोलते हैं वो मिलेगा, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए ग्रोथ की बात होगी। अब हम आगे बात करेंगे व्हाट इज़ इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन, ऑफ कोर्स, टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी विजिलेंट एंड टू एक्सरसाइज हिज राइट्स। सो इन्वेस्टर को हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर तरह की स्कीम्स हैं, और हर तरह का ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको
इस तरह की स्कीम्स भी सामने आए आपके कि भाई इसमें आप पैसा लगाइए तो आपका दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, बट आपको पैसे की सेफ्टी भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी एज ए इन्वेस्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमेशा विजिलेंट रहें, आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दें कि भाई मेरे को अपने पैसे को सेफ भी रखना है। Then, of course, the objective of investment is safety and liquidity, both. So, and of course, increase the rate of return. तो मेरा जो सेफ्टी को नज़र रखते हुए, लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखते हुए, हमें अपना एक रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना है, मैक्सिमाइज़ करना है, और उसके लिए देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल। तो हमें उस तरह से अपने आप को प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना है, सो दैट हम अपने लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखें और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं। और हमारे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज़ ऑल द 3 ऑब्जेक्टिव्स। हालांकि ये बहुत मुश्किल है तीनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ में अचीव करना, बट वन ऑब्जेक्टिव ट्रेड्स अगेंस्ट द अदर, बिकॉज इफ देयर इज़ अ हाई रिस्क देयर इज़ अ हाई रिटर्न, इफ देयर इज़ अ हाई लिक्विडिटी देयर इज़ अ लो रिटर्न। सो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि मुझे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, मुझे ज़्यादा रिटर्न पे फोकस करना है, मुझे ज़्यादा रिस्क पे फोकस करना है, या मुझे ज़्यादा लिक्विडिटी पे फोकस करना है। तो ये एज ए इन्वेस्टर आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, एज वी से दैट लेट द बायर बी वेयर, so the investor should also be always aware of the risks involved, and also कि मुझे अपने पैसे को सेफ भी रखना है और पैसे को बढ़ाना भी है। मनी शुड वर्क फॉर itself, but at the same time we should not lose money. So अब हम एज और रिस्क प्रोफाइल की बात करेंगे। अगर हम ये देखें कि 18 से लेके 35 साल तक जो एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हाई होती है, और सिमिलरली रिस्क एपेटाइट भी हमारा बहुत हाई होता है। तो बट लिक्विडिटी हमें लो होती है, बिकॉज़ हम शुरू करते हैं अपनी लाइफ, हम कमाना अभी शुरुआत में करते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे को रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, मेरे का रिस्क एपेटाइट भी बहुत है, बट मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है। बट 36 से 50 इयर्स की जो एज होती है हमारी, उसमें इट इज़ मॉडरेटली हाई, मॉडरेटली अगेन रिस्क एपेटाइट इज़ ऑल्सो मॉडरेटली हाई, एंड लिक्विडिटी इज़ मॉडरेटली लो, बिकॉज 36 से 50 की एज के बीच में हम थोड़ा कमाने लगते हैं, और हम थोड़ा सा रिस्क जो रिटर्न एप्रिसिएशन है हमारी, जो हम सोचते हैं कि रिटर्न आनी चाहिए, वो हम थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा कम हो जाता है, और हम ये हमेशा सोचते हैं कि भाई हम पैसे को गंवाए नहीं, और एक कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में रहती है और चलती है। तो वो बहुत अच्छी बात है। वी मस्ट ऑलवेज बी वेरी सेंसिबल in at the time of investing, and we also must make sure that we don't lose money. So और जो 51 से 65 years का एज प्रोफाइल है, that is the most balanced one, where the return expectation is also balanced, risk appetite is also balanced, and liquidity is also balanced. So this is the golden period where people who are planning their retirement, people who are actually about to retire, they always think and plan their investments, and risk profile matching is done accordingly. So this is very, very critical for the investor to understand that they should invest according to their age profile. So we should not bother too much about
कि मुझे करना कैसे है इन्वेस्टमेंट, अपनी एज प्रोफाइल के हिसाब से अपना रिस्क एपिटाइट डिसाइड करना चाहिए. एंड देन मोर देन 66 अगर हम मान के चले तो इट इज़ वेरी लो. Return expectation is also low, your risk appetite is also low, but liquidity is very high because you hardly have the expense. So, but at the same time, there is always a risk that your health may deteriorate and you may need large chunk of funds for your health purpose. So, investment options को अगर हम देखें तो हमेशा हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए और हमें धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना चाहिए और सेफली और in a very systematic way we should enhance our investments and we should increase our strength. Now, what are the various investment options? One, direct equity, and mutual funds are also there, and there are a lot of money market instruments. So the stock market is also providing very good returns, but at the same time there is a risk appetite. So we must always be very careful which stocks to invest, what kind of investments we should do, what company we should invest in, which sector we should invest in, and then how that sector is doing. So if you have time, you can make more money by investing directly in the stock market operations, but everybody doesn't have time. So if you don't have time to study and to do your own research, so it is, in that case, it is always better to go for a mutual fund, because in mutual fund the advantage is that the person, the experts, they are managing the fund, so they will be taking decisions on your behalf as to which security they should invest in, and which sector they should invest in, and which security they should exit. So the chances of return are always higher. So we must take a very calculated decision and invest in the mutual funds also in a more systematic way. Then of course there is a gold option. So आपको मालूम है gold is always on the growth path, and if you look at the linkage between the other parts of the economy, अगर stock market नीचे जाती है तो people, they start investing in gold, and vice versa also is true. So we need to keep our balance. Some money should go into gold assets, and these are it's not necessary that you need to buy gold only. Gold bonds are also available now. So instead of putting your money, too much money into gold, you can buy gold bonds also, so that you have a very structured bouquet with you, that some money is there in the equity, some money is there in the mutual funds, some money is there in the gold, and real estate is another option. So there also we should be very careful. We should not burn our fingers. These days there are a lot of people sometimes invest in properties which are not ready to move in. So sometimes your money gets stuck because the investment has gone bad. So this also has to be kept in mind always, and keep your portfolio very, very balanced. So some part of it should be into equity and other things, and then of course real estate is also one of the option to keep your money safe, and you can liquidate the real estate as and when you need the money. So this is one way of investing. Then there are money market instruments. Then bank fixed deposits are also there. So I think FD is one of the safest option. So you can
put part of your money into the FD, so that whenever you need the money, you can withdraw from the bank, and it is the most efficient way of utilizing your money whenever you need it. Then there are certain precious objects like very high level paintings and things like that. So some people who have money to invest in these kind of precious objects, they have that kind of option also. But my advice to the general investor is that these are to be used not in general parlance. If you have very excessive money, or you have money to keep in precious assets, then only you should opt for it. Otherwise, you should focus on the other schemes which are available. And life insurance policies. Now this is something which LIC का स्लोगन है ना, जिंदगी के बाद भी. So because you have to be cautious about that. If tomorrow you are not there, who will take care of your family? So if you are taking term insurance and life insurance cover, I think that is the best investment you can do for yourself. I recently had a occasion where one of my close guy relative, he was involved in something where he was not having any term insurance policy. So the term insurance policy is something which all of us should work as an investment option. Don't look at it from the perspective that it is for it is a insurance for your life only. No, it is an investment also, because this money is going to come back to you, and there are so many excellent term insurance policies available. So you must have a look at it from the investment perspective. And there are two ways we can look at the investments. So one are the short-term investments and long-term investments. Now short-term investments, of course, is your saving account, your money market funds, your bank fixed deposits, whereas long-term investment is your post office saving, your public provident fund, your bonds and debentures you are having, and the company FD or life insurance. So you must be very clear what are your short-term investments and what are your long-term investments, and always try to segregate that between the two. And it is always better to keep a balance between the short-term and the long-term investments, because your saving account will definitely be available to you your money is available to you in a short while, whereas if the long-term investments are there, they will come to you not so quickly back to you. So we must keep a balance that okay, I need this money, how quickly I need this money, and if you need some money immediately, then you should better keep it in the short term. Now there is always link between the risk and the return. The low risk has low return, high risk has a high potential return. Now there are gilt and edge instruments where the risk and the return is almost similar. If you take less risk, there is a lesser return. In saving account, we are taking lesser risk, but the return is a little bit more, because we are keeping money as an investment in the bank, so little bit of risk we are taking, right? And in the mutual funds, the risk and reward is, of course, there is a element of risk, but there is a reward also which is available. Ordinary shares, of course, we are taking more risk, because we are taking a call how to invest, where to invest, which company to invest, which sector to invest, and proper study is required for that. If you are having time for doing that, you should do it, no?
And then financial market, capital market, and money market. These are the markets which are where commercial papers and other instruments are available. And then comes the government securities and corporate securities. So lots of options are available for you for new issues, and so primary market and secondary market, both the options are available. So you can buy from the primary market, or you can trade in the securities. And then insurance policies I have already spoken. Government schemes are PPF, Senior Citizen Scheme, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, and last but not the least, National Pension Scheme, which is NPS. So this is a scheme floated by Government of India in 2004 for senior citizens. You must look at it, and you can put your money in NPS. It gives you tax saving, flexibility, portability, and it is very transparent way of putting your money. And then there are certain deductions available for you to multiply your money. And so there are collective investment schemes which can make you a good investor. So my advice to you all is, be a good investor, be a regular investor, but always take care of your money. Don't lose money, and make money. Make your money work for you. That's the message I want to give you. Thank you very much. Thanks. आइए अब आपको दिखाते हैं एक गीत जिसे गा रही हैं विदुश्री पांडे। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूँ मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू।
जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही। Namaskar and welcome to this program. Today's program is related to our certificate program in cooperative law and business law, which is offered by School of Law, and this is a 6-month duration program offered in English medium. This program, amongst other things, covers the laws which are in a way related to cooperative societies, and one of the laws which is covered in this program is Right to Information Act 2005, which I am going to discuss with you today. I will touch upon the important things about this act. The purpose of the act is, in democracy like ours, transparency is a must, and citizen should have the access to all the informations which the citizens should have, all the information which are held by public authorities and which are of public importance. Therefore, this act to provide the setting up of the mechanism or the regime for the operationalization of the Right to Information Act. And it also enables citizens to have access to the documents which are otherwise not be which are otherwise available only upon the discretion of the public authorities. So, one of the objectives of the act is to, in a way, curb corruption and malpractices, and this act has established a regime as it provides in its objectives for the operationalization of the system. And the important thing is that any individual can seek information from the public authorities, and there is no need to give any reason. No
no organization, no establishment can ask for any reason why the public wants the information. So this act provides that the all citizens shall have the right to information and every citizen has the right to inspect the government documents and records, obtain the certified copies of them. Certified copies can be obtained from the government department by paying specified fees. There is a provision for paying per page charges for obtaining that information. Certified samples of the certified samples of the material, and if any information is stored in a computer or any other device, then to obtain that information also. So these are the rights which are contained in section 3 of the act. Now, a very important aspect that is the meaning of information, and you can see in the slide that the definition is very wide. Any material in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, log books, contracts, so these are reports, papers, samples, models, data materials held in any electronic form, and information related to any private body which can be accessed by a public authority. So the definition is very wide. It covers every type of information, wherever the information is kept, whether it is in paper, whether it is in electronic form, or any kind of whether it is circular, regulations, advices, file notings, etc. Here I would like, this is a very important provision. The last lines, if you can see, any information which is information may be related to a private company or a private individual, but it is held by a public authority which the information which can be accessed by public authority. To give you an example, there has been cases where the private bodies have held that since they are not covered under the Right to Information Act, the informations available with them are not accessible to any public. They are private bodies, hence not covered by the Right to Information Act. But if that information is available to a regulator, suppose suppose there is a school and it is regulated by the education department, or a company which is regulated by some regulatory bodies, and if that body has access to the information, the public can also have access to that information from that regulatory body. This is the simple example which I wanted to give you to explain the things. Now, there are other exempted information. Now,
this act has, in a way, tried to minimize the effect of the Official Secrets Act of 1923. Under Official Secrets Act, there was a wide discretion with the public authorities. Public authorities could deny any information on the ground of that it relates to official secrets, and it cannot be given to the public. And there was no, they were not obliged to give any, to specify the reasons or specify the grounds on which they are denying the information. So the Act has tried to, in a way, minimize the effect of this Act. However, there are certain, because no rights can be absolute. There must be, and there are restrictions on the exercise of every right. So the Right to Information Act also makes provision in Section 8 for certain informations which a private individual cannot ask from the public authorities. And there has been a lot of case law on this also. Since we have a limited time, it will not be proper to discuss all these nitty-gritties. First thing which should be noted here is that it is the authorities who decides that the exemption, that the information falls under any of the exemptions. But the courts and information commissions, especially Chief Information Commission, which is the highest body with regard to the RTI regime for the establishment controlled by the central government. The CIC has passed a number of orders in which it has tried to define, or in a way limit or give clear meaning of the terms used in this section. So there is a quite good number of case law on this subject. So there are certain informations which are exempted. Firstly, the information which prejudicially affect the sovereignty, integrity, and security of the nation. Strategic importance, the information of strategic importance, which affect the economic interest of the country, which should not be given to the public. Relations with the foreign states, or incitement to an offense, or the information which is related to the contempt of court, which amounts to contempt of court. These are the exceptions which are also contained in Article 19(2) of the Constitution. Article 19(1)(a) deals with the right to a freedom of speech and expression, and Article 19(2) talks about the restrictions, which what we call reasonable restrictions, which can be imposed on the right to on the freedom of speech and expression. Breach of privilege of Parliament and state legislature under Section 105
Article 105 for the Parliament, and there is a section for 200 there is a section for state legislature. The Parliament has certain privileges, certain communications which are between the members of Parliament or the members of the state legislature are exempted from disclosure. Similarly, which harm the competitive position of a third party, trade secrets, etc., confidence, trade secrets, or intellectual property related information which are related to intellectual property of a private individual or private company, information held in a fiduciary capacity, such as doctor and patient, lawyer and client, and this type of information is exempted from disclosure. Received in confidence from a foreign government, sometimes there may be situations, suppose there are some information related to terrorist activities or some money laundering related information which is received by the foreign states, and at times foreign states put some kind of restriction. They provide the information on the condition that it will not be disclosed to the public. So this kind of information is also a disclosure of which endangers the life or physical safety of any individual. That is also this information cannot be given to any individual, which impedes the process of investigation or apprehension of an or the protection of apprehension or the protection of a offender. So there may be situations which are necessary for the investigation. Because if the information is disclosed, the investigation may be affected, some criminal investigation, and it may be related to offences related of small level, individual level offences, or it may be related to the offences which are of you can say national importance, offences in which the security of the state or the public order is in danger. So this type of information, cabinet papers, etc., advises the communications between ministers and secretaries, etc. These are also exempted, which relates to the personal information, disclosure of which has no relationship with any public activity. This is also a very important aspect, because the information related to the medical history of a person, or information stored in service book, which has no public purpose. If somebody gets that information, no public purpose will be served. Actually, if you see, the objective of the act is to curb corruption, to minimize corruption, and to increase transparency in the government system. So this kind of the purpose of right to information is to provide that kind of information to the public which has public purpose. So private information, there is also some controversy on this. There has been
conflicting judgments whether the wife has the right to seek information about the income of her husband, her salary, etc., or some information related to his private affairs which are stored in service books, etc. So there has been some controversies also, but in a nutshell we can say the information which has no public purpose should not be disclosed. Information related to copyright of a third party, of a private individual, of a private company or individual, not related to the copyright information which is not related to public authorities other than the state. If the state holds a copyright, then that information is under the purview of the Right to Information Act. Otherwise, if the copyright information or intellectual property related information is related to any individual, then in appropriate cases that information can also be exempted from the disclosure. Now, every organization, every public authority or a government department must appoint one or more public information officers, and in every administrative unit, depending upon the size of the unit, every information, every authorities is obliged under the Act to appoint a public information. There can be assistant public information officers also to assist the public information officers. And one important point is that it is the duty of the public information officer to provide the information in a time-bound manner. And the Act also provides that if the public information asks any information from any official in his unit or in his organization, then it is the duty of that official to provide the information to the public information, because public information officer can only provide the information to the applicant when he gets the information from the concerned people. So if any public if the information is asked by public information officer and is not provided by any official, then that official also is liable, and its obligation is he is obliged in the same manner as he is the public information officer. So this is the provision with regard to the appointment of public information officer. Now, with regard to the procedure, procedure is very simple. Any individual can write a simple application giving his particulars, his address, name, address, etc., asking for information. There is no prescribed format as such, and now the information can be sought online also on the CIC portal. There is a provision for applying online for information, and the information is transferred to a concerned department.
concerned government organization. And if a person is not in a position to write the application, it is the duty of the public information officer or any other officer of the organization to assist him in reducing the his application into writing. This is a very simple process. Anybody can write a simple application, but the point to be noted here is that the information should be very clear. It should be written in such a manner that the public information officer is able to know what you really want. And sometimes it has been seen that the regulations are very ambiguous, and it should not be related to the facts which are in the knowledge of the which are in the files. It should not be related to the opinion. What do you think? What is your opinion on this? Why it has not? Any information which is available in the files can be given by the public information officer. And now it's a 30 days generally, and if it is transferred to third party, then it's a 35 days within which the person has the right to get the information. And if he is not satisfied, he has the right to appeal. And first appeal is in the same organization, and the second appeal is in the State Information Commission or the Central Information Commission, as the case may be. If the organization belongs to the state government, then it is the State Information Commission, and if it belongs to the central government, then it is the Central Information Commission. This is the procedure in the simplified manner. And here I would like to also mention about the section 4, which I could not mention due to the paucity of time. Section 4 provides for certain kind of information which should be automatically available in the website, and every organization is bound to maintain that information in the website, so that the public need not specifically ask for this kind of information. And another important point which I would like to make here is that every right comes with responsibility. So when we ask for information from any department, it should have public purpose. It should not the purpose should not be just to have fun, or just to because public resources are involved. Public resources are involved in procuring information and providing information to the individual. So the right should be exercised with responsibility, which every citizen is expected to do. So with this, we come to the end of this presentation. Thank you very much. आसाम की विशालता केवल ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण में भी दिखाई देती है। यही वह कामरूप है जिसकी गाथा पौराणिक कहानियों में भी पाई जाती है। मैं कामरूप हूँ, मैं साक्षी हूँ उस पौराणिक काल का। प्रभु महादेव की करुणा से मुझ में ही कामदेव को नया जीवन मिला, इसलिए मैं कामरूप हूँ।
ऐसी ही एक पौराणिक गाथा जुड़ी है आसाम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या देवी के मंदिर के साथ। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त माँ कामाख्या के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए समस्त संसार भर से यहाँ पर आते हैं। जिस पहाड़ी पर मां कामाख्या का मंदिर स्थित है उसे नीलांचल पहाड़ कहते हैं। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए अति उत्तम मार्ग की व्यवस्था है। परंतु एक समय ऐसा भी था जब लोगों को पत्थरों की सीढ़ियों पर चढ़कर वहां तक पहुंचना पड़ता था। भक्ति के साथ साथ यह एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी इसी पर्यटन से अपनी आजीविका भी चलाते हैं। हर वर्ष आषाढ़ माह में मंदिर के द्वार कुछ समय बंद रखने की परंपरा है, जिसे अम्बुवासी कहते हैं। अम्बुवासी के दौरान देश भर से लाखों भक्तजन यहाँ पर आकर रात बिताते हैं। मंदिर खुलते ही भक्तजन माँ कामाख्या के दर्शन कर लेते हैं। अम्बुवासी प्रवृत्ति के समय यहाँ अत्यंत भव्य मेला लगता है। भक्तों की ऐसी ही भीड़ नवरात्रि में भी दिखाई देती है। Hi viewers, welcome to the live session on email security best practices. Myself, Dr. A. Murli Rao, Head of IT Department, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. So this session I would like to talk on email security best practices. The talk precisely on various email security threats and various best practices to be followed and concluded with concluding message. Viewers, we all know that about the email, electronic email. It's not a new thing. It is everyone's life. Most of the people are using, or millions or billions of users across the world using electronic email. Of course, nowadays some other came like a WhatsApp. Mostly it is dominating, but of course, when comparing with the features of email, so the email is a far better feature than any other message transfer service. See, the email context came when we just go beyond its history.
in 1971, the first email was sent. It is within the organization. That is we call it as ARPANET. That is Advanced Research Projects Agency Net. That is of US based. So they tried that first to exchanging of some information between two electronic devices, and fortunately they got succeeded. When we talk about the first email, that was in 1971, that in ARPANET, that is Advanced Research Projects Agency Network. Then since then, that was the beginning. Then after that, so several agencies came into. Then so email services started, and there are many players too, like nowadays Gmail, Yahoo Mail, even from Microsoft. It is of Microsoft Exchange, or we call it as Outlook, and many more are there. So every mail service has its own merits and limitations. Of course, anyway, this talk is not on going to what is the email, but main thing is that the email security best okay practices. Okay, so let's see that. So mail means that it is a service for exchanging messages. We call it as a mail between people using electronic devices. The devices could be either of maybe a desktop to desktop, or desktop to laptop, or laptop to laptop, or maybe of any other smart mobile devices. Could be a mobile phone, or maybe tablet, or any other mobile electronic device. So it's a service for exchanging of messages between people using electronic devices. It operates across computer networks, preferably internet, or also within the suppose a messaging service needed within an organization. In such case, even local area network also the electronic mail can be used or can be worked. And the email server accepts and forward and deliver and store messages. No need to both sender and recipient need not connect simultaneously to the mail server when sending a mail and receiving the mail. So even offline also, once a person has sent a mail, so offline at any time at the convenience of the recipient can connect and receive the message, correct? So the point here is that there is no need where both sender and recipient connect to a particular mail server to send and receive the message. So that's why this is a very short in form of the electronic mail. And see that we need not go in depth about what are features, what are various facilities available. So the main the theme behind today's topic is that the security best practices. So there is when we talk about email, so there is a email security concern. So generally email is a play tool for hackers and cyber criminals to spread malware, spam, and phishing attacks, and many more, and is one of the main entry points to access an organization's network. So the main concern, the security concern of an email is that so the hackers or maybe or we also call it some cyber criminals or use this email as a play tool, mainly for to spread spam, to do some kind of phishing attacks, and so on, and also to do some kind of malware spam. This is a main for some kind of people use this as a play tool to spread the spam and others, and also this is more or less of a main entry point so to access a particular organization's network. So once any person enter into organization network, more or less able to have
to know what type of network it is, what are services running in, so that to know some kind of even the security, what type of security the system or the organization has, so that some kind of scanning able to the hackers can do some kind of scanning, means that to know something about the blueprint of a particular network. That's why even though it is very user friendly, email is very user friendly, very essential, but the biggest it has the biggest security concern. That's why so we need to have certain best practices to protect all, like a spam, maybe to stop the phishing attacks, and even to stop the malware, like that, all about. See, there are certain common security threats, especially on email service. So one is a spam. The most thing is that I think we are all somewhere or the other experience of the spam mails, correct? Even out of 10 mails, of course, we used to get at least 50% of spam mails. But of course, nowadays the email service providers like Google or Yahoo or any other also are using various spam filters and effective spam filter. That's why the spam mails are reduced day by day. Even the Google, Gmail and others are also using some intelligent spam filtering tools also to filter the spam and sending. And again, still there is some kind of ambiguity. What is happening is that a separate it goes as some kind of a spam mail. At least if you want, we can use, other we can throw it out. Sometimes a genuine mail also enter into this spam folder. Then again there is an option to push back to as a genuine mail, or genuine mail also can push back as a spam, like that is there. But when comparing with the previous years, so day by day the spam filters are working very effectively to filter the spam. This is one of the prominent threats on email service, spamming. And another is that the phishing. So is an attempt. Phishing means that it is an attempt to steal personal information or break into online accounts by using deceptive emails, or maybe some kind of some ads, some kind of URLs, or we call it as a links, or even messages. So phishing is that it is some kind of attempt to make that or to encourage or to provoke the email users to start using that. That's why generally that phishing is sometime suddenly we may get one mail saying that your valued customer, you are valued customer. So you are selected for a so and so, and you are going to get a money price of say 10,000 or 10 lakhs or whatever some amount. So and please click here for your acceptance, or provide some your credit card information, or at least a bank detail, so that we will transfer the money, or pay some small token amount so that to complete the formality. So these are all some kind of a phishing mails where there are something interesting, and even such mails even provoke us also, and to make some attempt, and after that what a damage is going to happen. So that's why another prominent attack or a threat on email is that phishing attacks. One is a spam. I hope everyone have the experience of that. But nowadays spam filters are there, so there is also some kind of software tools where to identify whether it's a genuine mail or ingenuine mail, or accordingly filtering, so that email users can get maximum as maximum as possible genuine mails. And another is that the phishing attacks, and third is that malware. This is also another very dangerous
a threat on email. Generally, that the malware comes in form of some attachments. So knowingly or unknowingly, if you click that, the malware means that it is some kind of malicious code which will go into the system and spread across the systems within that network, and which will damage or maybe steal whatever bad code written, malicious code written for that. So it will steal. See, for example, if that malware, that code is suppose enter into our particular desktop, suppose that code written that to steal the data, important data, and send to the those who are the creator. So that's why the malware is also one of the prominent threats for a email users are on a email service. So one is a spam, one is a phishing, and another is a malware. So what I want to say here is that users, especially, even though we have, or maybe the organization enforced various spam filters and so many effective security devices, but first and foremost is that user awareness is very much needed to assess whether by seeing a mail, whether it is a genuine mail or ingenuine mail, and do accordingly. Apart from these threads, few more also there. Email spoofing. Another is that email spoofing. Email spoofing is a technique to trick users, email users, to make them think that the mail message received is from a trusted or a known user or a resource. So that is called spoofing. Spoofing is nothing but some kind of creating some kind of trust by seeing by seeing that. No, whatever mail we received, that seems that it came from our genuine resource or trusted resource, but so that is also not. But of course, there are certain ways to find that whether a spoofed mail or a genuine mail. So another email threat is that email spoofing or a spoofed email, and another is that the botnet messages. It means that it is a method of infecting a network of computers with malware. Malware means that again it is some kind of a software code or malicious code designed, developed for certain malicious activity. It is used to attack or steal the data or send spam or an access a device and its connectivity. This is a botnet messages, and another is also BS. We call it as a business email compromise. Mostly, it gains access to a business email account and imitates that it is a owner's identity. Imitates the owner identity. These are all some kind of a tricks. We call it as some kind of threats on email. So these are more prominent email security threats. So of course, viewers, since we are all using email, so some way or the other, we might have faced or experienced with this kind of email threats. But nowadays, all email service providers, maybe a Gmail or a Yahoo Mail, or maybe Microsoft Exchange, that is called as Outlook, and many others also. So inbuilt some kind of artificial intelligence AI modules also to detect and filter whether it is a spam or maybe phishing attacks or maybe some kind of malware. All these things somehow effectively working, but on top of it, as I told you, that user attention is very much needed to keep away from this kind of threats. Let's see that how do people fall into email trap. Another big question is that how do people fall into email traps? People fall into email traps due to urgency. Sometimes that you suppose immediately I have to check off all the mails before leaving the office, for example. So because of some urgency, so suddenly we can click that without seeing its genuinity or where it is, real it is genuine or a fake.
So one of the okay one of the thing is that urgency. Second is that curiosity also. So generally any some interesting mail with some header comes that, so generally we as a people have with some kind of curiosity, again we click on that. Sometimes that some kind of a fancy words will come, or maybe some fancy message come, or maybe some fancy image also will come, which attracts us or which tempt us that to click what it is, correct. So that's why one is that with curiosity also we can, that's why. So why or how we fall into email trap is that one is urgency, immediately, so I had to check all the mails before leaving office or some kind of thing. So for that, without paying attention to know whether genuine or ingenuine, that's why there's one way of going into trap. The second is that some kind of a curiosity, and another is that the greediness, third is the desire to please, or another is even with the fear or complacency. These are all some of the some of the incidents or some of the scenarios where people are fall into the email trap. See, one is also so fear. It means that sometimes some threatening mail come that I know that you did so and so, so that if you have not done this time, then a severe punishments or maybe some severe action like that. This, with some kind of a fearness also, people so start you start clicking that emails even though they are ingenuine. So that's why these are all some scenarios where people are fall into trap of email trap, correct. And another is that how to spot once always the email traps are there, but how to spot email threat? How do we know whether it is a genuine mail or a ingenuine mail? So one can spot and suspect email threats through suspicious email address. Suppose, for example, generally, mail address should be almost genuine, readable, have some meaning, generally. But, sometimes, if it is a suspicious mail, for example, that the email account is of, the name of the email address is, looks like, different. So, for example, suppose if it is some kind of financial mail from a financial institute or a bank, really if a genuine mail from the bank, generally it is suppose a PNB. So definitely the domain name should be something followed by the name of the bank or something. Or if suppose some mail coming from some educational institution, then email is also somehow some relevance related to that institution. So like that. So generally genuine mails, genuine email address are readable, understandable, plural. But generally some kind of a threat mails are of some kind of suspicious when by seeing the email. That's why what I want to say here is that we were compulsory, we have to see the email address before click on it. Sense of another is that sense of urgency also. It means that suddenly frequently from one source coming mail again and again. So that is also some kind of some kind of a spot where we can pay some attention that why, because if it is not from a known trust agency or from a known place or from a known address, but frequently some mail is frequently generating or frequently we are receiving that, so there is some kind of a suspiciousness. So this also one can spot that. Then, but of course there are certain genuine mails also because of some urgency may come, but we have to see the the address, so that by seeing that we can assess. Another is that information verification request. Sometimes the mail comes that you please verify your address, by click on this link. Why? Since we are a regular email user, there is no need of that verification request clicks some link for a verification purpose. So rarely it comes that, even though for example see that a new version, suppose whatever we are using a particular email, so they change it to some new version or something more. So in such case only some kind of verification. Suppose if they have migrated existing accounts into the new system,
for that purpose, maybe there is a chance of verification, not like a frequent. So that's why, so if any mail is coming and asking us click here to verify yourself, that is also source of okay, some kind of email thread. And suspicious attachments, and also asking continuously click this for to authenticate yourself. So these are all for a regular email user, I don't think such things. But if any mail is coming with such a thing, definitely we can spot that the mail may not be a genuine. But of course, we can see, one is by seeing the mail address and so on, what I listed out. And now email, for that, now we need some email security. Why we need a email security? So it is to describe different procedures and techniques to protect email accounts, email content, communication against unauthorized access, and protect from the loss of data or a compromise, from spreading of protect from spreading of malware, spam, phishing attacks, and so on. So for that, email security is needed. And another, why email security best practices are so important? Because to prevent the attacks, to prevent the malware, to prevent the spam, and similarly to as a proactive measure, and to detect again all the suspicious activity and email threads which are already inside our email environment before they can cause damage, and then respond, so limit the damage. So why the email best practices are so important to prevent, to detect, and to respond for any spamming or maybe phishing attacks or any some malware and so on. See, viewers, just I will say a few things about best practices. So when we talk about email security best practices, so there are, one is that the at email server environment, the best practices to be at two places. One is at email server environment, and second is at end user environment. So at email user environment, so some of the best practices are enforce access control lists at network domain and security devices. It means that so suppose a mail server is inside our premises. It means that if in organization that server need only the sending and email, for that only two ports are needed. So probably sending mail SMTP, which will work on port number 25, and maybe POP, that is receiving mail, works on 110 port number, maybe IMAP of 143. So other than these ports, all other ports can be closed. So that is a with that also, and again whatever some IP address given, that allow the traffic of email traffic only to IP address of where the email server is configured. So that is the first. Second is the hardening of the operating system. See that close all the ports, unnecessary ports other than required, as I told you that port 25, 110 and 143 and so on. And similarly enforce SSL, that is secure socket layer. That is also means that always so that what will happen, the data transmission or mail transaction between user and the server will be in a encrypted mode. There is no data travel, will not be in a plain text. And use of secure email service also, then use some secure email service, that is application point of view, and activate DMARC protocol, that is a domain based message authentication, reporting and confirmation protocol. Encrypt sensitive even the some sensitive data, sensitive mails are there, they can be encrypted. And enforce password policy, which is also very, very important. See that every 30 days or maybe 40 days or whatever some time interval, see that password policy should be enforced. It means that have some what we call it as high-end policy, where policy as big as possible, mixing of special characters, alphabets, numerals, like that the password policy should be. And on top of it, backup is very, very needed. Even though something goes wrong, backup helps a lot. And another is that at the email end user end, so access at trusted network, in particular wireless,
use the strong passwords, as I told you that, put a password as big as possible, mixing of special characters, lowercase, uppercase, and numeral, so that even though hackers are trying to hack the password, but because of its strongness, it will take a lot of time or is even difficult to hack. And have antivirus at desktop, laptop, and other devices. And these are all, some of the best practices at user end, and implement on top. And first, another is that compulsory organization should have a email policy, and create a email security awareness also very, very essentially needed. Of course, so for that, secure email gateway is also needed, and certain features like deployment options, spam filter effectiveness, malware detection effectiveness, threat intelligence. So all these are all while choosing email secure email gateway. So these are features to be keep it in mind. So viewers, these are all some of the best practices where to secure email. These are all needed. So the message for this talk is that email security and best practices are essentially needed and implemented and practiced to have secure email service and protect from spam, phishing attacks, and so on. So, well, viewers, I hope this talk enlighten you on email security best practices. Thank you. Thanks for listening.